नाज़रीन गिरामी, भारत की तारीख़ में कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनकी इखलास वाली सियासत को लोग बारहा तबसरा करने की और उनकी खुसूसियात पर और उनके अखलाक पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सियासी एतबार से उनकी गुजरी हुई साफ़ व शफ़ाफ ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं। सियासत जब गंदी हो जाती है तो उस वक्त इस तरह के चेहरे लोगों के सामने ला कर के सियासत बग़ैर किसी दुनियावी मकसद और बग़ैर किसी गर्ज़ के भी की जा सकती है और वो बुलंद और अहम तरीन ओहदों पर भी होकर के हो सकती है। इसका तज़किरा बार बार किया जाता है जब इस तरह की शख्सियात का जब कोई बरसी का दिन होता है या उनके अलग अलग तरह के खुसूसी अय्याम होते हैं जिनकी यादें ताज़ा होती हैं। इसी में से एक नाम है इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब की, जिसमें ऑल इंडिया कन्वेंशन जो है हुई उनकी ज़िंदगी पर और उनकी सियासी ज़िंदगी पर। इस मौके पर मुख्तलिफ़ सियासी लीडरान भी थे और उनके ख़ानदान से वाबस्ता अफराद भी थे। इन्होंने इस कन्वेंशन में, इस कॉन्फ्रेंस में जहाँ शिरकत की, अपने ख़यालात का इजहार किया, वहीं नामानिगारों से उनके बारे में कुछ अहम तरीन गुफ्तगू भी करने की कोशिश की है। आइए इस मौके पर मुताल्लिक़ा सियासी लीडरान हो या उनकी ज़िंदगी में वाबस्ता कुछ अहम तरीन अफराद क्या कहे हैं इस सिलसिले में, पॉलिटिकल कैरियर के सिलसिले सुनने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर एक शानदार तकरीब हुई, आपके वालिद साहब की याद में। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? जी, मैं एक्चुअली लोगों के सामने मैं चाहती हूँ कि वालिद साहब का वो इमेज आए। देखिए वो उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिटिक्स थी। जो आज की पॉलिटिक्स है ना, उससे एक 100% डिफरेंट। बोले कि ज़रा सा कुछ भी नहीं है। उनकी जो पॉलिटिक्स थी ना, वो ऐसे लोग थे, ऐसे थे कि आप किसी वक्त दिन के या रात के किसी वक्त में उनके पास अपने ज़रूरत लेके जाओ तो वो तो तैयार होते थे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। आज किसी भी हो पॉलिटिक्स पर जाते हैं तो पहले हमें सोचना पड़ता है, उसके पीओ के थ्रू जाना पड़ता है। वो भी कितने एक पीओ नहीं, कई पीओ से होके गुजरना पड़ता है और उनके पास पहुंचने के बाद भी उनसे मिल पाएंगे मुश्किल हो जाती है। अपने प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, ये भी उसके कुछ नामुमकिन सा लगता है मुझे। तो मैंने वालिद को जब देखा, मैंने सोचा था कि हर पॉलिटिशियन ऐसे होगा, मगर जब वालिद हर वक्त, यहाँ तक पार्लियामेंट में रात के वक्त भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं था उनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता कि एक टाइम से एक टाइम तक, उसके बाद मैं नहीं मिलूँगा किसी से, ऐसा कुछ भी पाबंदी नहीं थी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी थी, जैसे हम वक्फ करते ना किसी, वैसा कर दिए थे वक्त। तो आज जो हम देख रहे हैं कि सियासतदान एक मामूली कारपोरेटर भी जो है करोड़ों रुपये में करोड़पति रहता है, एमएलए करोड़पति रहते हैं। मेरे वालिद साहब 40 साल 45 ईयर्स, मोर देन 40 साल से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। जब गुजरे ना, दुनिया से गए ना, उनकी पेंशन के थोड़े हज़ार उनके अकाउंट में पड़े थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इनफैक्ट ऐसे पॉलिटिशियन थे जो गंवाए थे, कमाए नहीं थे, गंवाए थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी थी, उनके वालिदा की, उनकी वाइफ की प्रॉपर्टी थी, जो उसमें तो बच्चों की कब शादियाँ आते, कुछ ज़रूरत उन्होंने जो संभाल नहीं पा रहे थे, आखिर में पॉलिटिक्स में थे, इन्वॉल्व थे, तो उन्हें बेचना पड़ा उन्हें, मगर उन्हें कमाए नहीं, गंवाया है इनफैक्ट। ना उनके पास गुजरते वक्त, दुनिया से जाते वक्त ना अपना मकान था, ना अपनी गाड़ी थी, ना कोई बैंक बैलेंस था। ऐसे गए हल्के होके। कोई आखिर में को तो किसी के पास कुछ तो होता है ना, वो तो बोले कि नहीं मैं जैसा आया हूँ वैसा गया। मुझे ताज्जुब होता था, ऐसे इंसान भी हो सकते हैं दुनिया में। तो सबसे मुख्तलिफ थे। आखिर में क्या बताना चाह रहे हैं? मैं एटलीस्ट इतना बताना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई वोट दे के वो एक ऐसा पोजीशन में बिठाता है, तो उनके लोग ही करते हैं ना, लोग ही आपको वोट दे के वो पोजीशन में लोगों की तरफ से आप पहुँच पाते हैं। तो लोगों की मदद करना तो आपका फ़र्ज़ बन जाता है ना। उन्हीं की जब वोट मांगने जाओ तो हर जगह जाते हैं, जब वोट मांगने के मिलने के बाद जब उनकी पोजीशन मिल जाती है तो एटलीस्ट
उनके साथ भी उसी तरह पेश आओ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से ज़रा निकल के आओ। तो यही आपका मैसेज है। हाँ। थैंक यू। सुलेमान सेठ साहब को याद किया जा रहा है, इस पार्टी के कौमी सदर हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज़ाद भारत में तकसीम हिंद के बाद मुसलमानों का हाल जो था, उस वक्त सेठ साहब कायदे मिलत के साथ आए। मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं थी। मुसलमानों के लिए मुशावरत बनी, सेठ साहब की कोशिश थी, क्योंकि वह ज़बान जानते थे। सिर्फ अंग्रेज़ी के आदमी नहीं थे, कायदे मिलत अंग्रेज़ी जानते थे सब। पर्सनल बोर्ड बना 72 में, और मुल्क के मुसलमानों ने आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना शुरू किया। उसमें सेठ साहब को बड़ा रोल है। भारत के मुसलमानों में वाहिद शख्सियत है जो 36 साल तक पार्लियामेंट में रहे। इक़्तिदार उन्हें ख़रीद नहीं सका। बारहा कोशिश की हुकूमत ने कि वो अपने मकसद में इस्तेमाल कर ले। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने चाहा कि वो गल्फ़ चले जाएं और ये कहें कि इंदिरा गांधी गलत नहीं है, उन्होंने मना किया। यूनुस सलीम साहब चले गए, मिनिस्टर बना दिए गए। उन्होंने हमेशा वसूलों के साथ सियासत की। ऐसी सियासत को याद करना मिल्लत की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते हम एक बावसूल उम्मत हैं। उसूलों के साथ, उसूलों की बुनियाद पर हम एक उम्मत हैं, सिर्फ नाम से, पैदाइश से नहीं हैं। उन उसूलों को सियासत में कायम रखना, उनके लिए लड़ते रहना और इक़्तिदार को ठोकर मारना, ये इकलौती मिसाल है इब्राहिम सुलेमान सेठ की। इसीलिए हम उनके साथ तालीमी ज़माने से जुड़ गए थे, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, और उनका हमारा 35 साल का साथ रहा। इंतकाल में कंधा देना भी नसीब रहा मुझे, और उसके बाद उनकी अमानत की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। अब मेरी कोशिश यही है कि जो उन्होंने उसूल हिंदुस्तान की सियासत के लिए उम्मत को दिए, सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ बलिदान है, उसको आने वाली जनरेशन याद रखे और उन उसूलों की बुनियाद पर मुसलमान सियासत करने के लिए आमादा हो। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। अदना सा इंसान हूँ, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत के साथ रहने का ये फ़ायदा हुआ कि ख़यालात बड़े हो गए, सपने देखने लगा, डे ड्रीमिंग, बड़ी बातें सोचने लगा। कर नहीं पाता हूँ, सोच बड़ी हो गई बड़े आदमी के साथ रहते रहते। तो वो आज का जो प्रोग्राम है वो 3 नवंबर है, सेठ साहब का यौम पैदाइश है। बेंगलोर में उनकी जवानी तालिब इल्मी मैसूर में कटी, इसलिए तय किया कि ये बेंगलोर में होना चाहिए। बेंगलोर के लोगों को मालूम होना चाहिए, आपके चैनल के ज़रिए यहाँ के आपके रीडर्स व्यूवर्स को मालूम होना चाहिए। नई नस्ल नहीं जानती सेठ साहब कि इब्राहिम सुलेमान सेठ कौन थे। जब उनको जानेंगे, उनके उसूलों को जानेंगे, तो कुछ लोग तो उनके उसूलों पर चलने की कोशिश करेंगे। यही कोशिश है आज के इस प्रोग्राम, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। क्या ये प्रोग्राम काफ़ी रहेगा? इसके अलावा ये चलता रहेगा। ये यहाँ से आज 3 नवंबर को हुआ है, ये अलग अलग स्टेट्स में चलेगा। उनके नाम से सेंटर बना रहे हैं, अभी ऐलान हुआ कालीकट में, जो पॉलिटिकल स्टडी का सेंटर होगा। पहला सेंटर होगा मुसलमानों का, जहाँ पॉलिटिकल स्टडी होगी। आरएसएस के पास है, आरएसएस के पास है, और किसी मुस्लिम लीडर ने इस पर नहीं सोचा। IJLAAS ने सोचा है कि उनके नाम से सेंटर कालीकट में होगा, जगह ले ली है। इंशाअल्लाह पॉलिटिकल स्टडी का एक मौका मिलेगा। बच्चे हमारे रिसर्च करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स पर, हमारे रहनुमाओं पर, इंडियन डेमोक्रेसी पर, और हौसला देंगे आने वाली नस्लों को। सेठ साहब को याद किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं आप? 1-2 मिनट। He is a legendary figure in the arena of political culture of this country, and he, Banatwala and Shahabuddin, Sait Shahabuddin, they are very great leaders. They work not for party or anybody, but for the community. Party is there. Party is a platform. But on that platform, we have to work for the people of the country without any leaning towards any faith or anything. We have to work for the people, and we have to work for the country as a whole. And
If that has to happen, there should be peace. Without peace, no progress. Peace comes with progress. So that's why they all work for the peace and progress of this country. That's why they have become great leaders. तो यही कहना चाह रहे हैं कि आज के हालात में मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। 100% ज़रूरत है। ग़ुलामी की सियासत को छोड़ना चाहिए हम लोगों को। जब तक हम दूसरे पार्टियों में सब जगह में 40 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इस मुल्क के 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ है। मुझे मेरा आखिरी तजुर्बा नतीजा यही है कि अनलेस वी हैव गॉट आवर ओन पार्टी, आवर ओन लीडरशिप, हमारी लीडरशिप होना, हमारी पार्टी होना, तभी है ना। अब जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आई विल रिवार्ड हिम। नहीं है तो ग़ुलामों की पार्टी में रहे तो जब तक ग़ुलाम बन के रहेंगे उस वक्त तक जितना बड़ा ग़ुलाम बनेंगे उतना बड़ा आपको ओहदा देंगे। जिस दिन है ना आपकी कौम की इंसानियत की बात करेंगे उस दिन ये हमारे काम का नहीं है भाई, इसको हटाओ बोल के हटा देंगे। आज का प्रोग्राम जो है अभी इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब का अभी 104 साल का आज का एनिवर्सरी हो रहा है और हिसाब से एक प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ है। पूरा इंडिया में प्रोग्राम होने वाला है। अभी बेंगलुरु तो उनका ही गाँव था, वो हिसाब से अपन फर्स्ट प्रोग्राम तो यहाँ रखा हुआ है। हर साल में ये प्रोग्राम होता ही रहता है। इसमें क्या है वो उनका लाइफ जो है वो सबके लिए मालूम होने के लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। अभी जितना स्पीकर्स इधर स्पीच किए हैं वो लोग सब सिर्फ साहिब से बहुत अच्छा रिलेशन रखने वाला था। वो लोग का राय में क्या है करके इधर बताया गया है, वो हिसाब से यह प्रोग्राम बहुत अच्छा सक्सेस हो गया रहता। एक उनकी ज़िंदगी के सिलसिले में कोई एक बात बोल सकते हैं सर? नहीं, वो तो है ओपन बात है क्योंकि वो बेंगलुरु वाला ही है और वो पूरा इंडिया का माइनॉरिटी के लिए एक अच्छा काम किया है। वो एक मुसलमान अच्छा मुसलमान था। वो हिसाब से अभी जब भी वो पार्लियामेंट में उठता था और इंडियन माइनॉरिटी का भलाई के लिए हमेशा वो लड़ता था। वो हिसाब से उसने जो पार्टी बनाया था मुस्लिम लीग पहले, वो मुस्लिम लीग का सदर साहब था, वो वहाँ से भी उसको निकाल दिया और पार्लियामेंट मेंबर था। उसको चाहिए तो उसका मरने का तक MP बन के मर सकता था और वो भी छोड़ की वो कौम के लिए वो बहुत काम किया है। उनका याद अपने लिए अभी नौजवान छोकरा लोग के लिए अभी उसका फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। Today's message from we are remembering Sulaiman Sait Sahab. So how do you see his personality? He was a great leader, you know. He was a great leader and he was bold enough to say and argue and stand for the upliftment of the minorities. He did a lot of sacrifice. He had his 35 years of parliamentary book record. And during his parliament, he was strongly arguing for the welfare of the minorities. And he had a very good set of people with him, you know. So he was, I would like to say that he was a model to all other leaders. He believed in principle, he stood for principle, and he fought for the cause of the downtrodden section of the society. So he begins his career with Muslim League. Yes. And later he formed his own party. Yes. So how do you see? That is, I just told about that. There may be some reason, but any split, whether it is our party, I was also in one side, no? In that way, that's a loss for everybody. Whatever may be the X-ray kind of result on that, so every split has got its own damage, which is unrepairable damage. That's a fact. So that Sir was very much worried about that, you know. He had a dream to get it reunited, and he actually prayed for that. Oh, so you mean to say the differences and the split in the party caused great damage to great damage and which cannot be repaired actually. Because I was there, no, even before the split, I was active in the youth side, and during that period only it was done. Then it's a fact that its damage will remain as it is. Of course, as far as IUML and the party that is concerned, you know, that again we united. Again some unforgettable things happen. Anyhow, that is not good. It was a bad experience. Now,
I told in the meeting also, let's learn a lesson from all this kindness. Stand united in that. Especially the minorities in this country must have unity. That's the only way for our success. So do you feel that national level Muslim political party is the needed? Because minorities should stand together. Because there is a lot of what is called encroachment and that kind of things are going on, isolating the minorities. And we should not be, a victim to that. As far as possible, especially in Indian society, there must be minorities unity. Because there have got a lot of things to be done as per the Constitution of India. In order to protect that, unity is very much required. So, of course, there may be difference at least. That's a different thing. But we have to stand together. At present situation, social and political Various situations. What is your final message? That is, when this BJP is doing all kind of the damage to the minorities, their only intention is to tarnish them and wipe their identity and spoil their constitutional right. All these things are going on. In this particular junction, instead of fighting each other, we have to stand together. Not only the minorities, all these secular loving people should stand together to fight against this. Today, INL, Kerala State Committee and Karnataka State Committee jointly organized a function to commemorate Janab Ibrahim Sulaiman Sait Sahib. He was Member of Parliament for 35 years. He was the member in Rajya Sabha also. He served as Member of Parliament as a fearless leader for all the downtrodden communities in the country. He always spoke, not for the Muslims alone, but for the suppressed people, whoever may be. He advocated for communal harmony. He had many non-Muslim friends. I was one among the translators of Ibrahim Sulaiman Sait Sahib. When he visited Kerala, he chose me to translate his speech. I remember when I was studying for second year post-graduation, the managing committee president of at that time demanded me to go to one place nearby the college where Sait Sahib will speak by the evening. You should translate his speech. That was the demand made by the manager. I really puzzled because it was my first experience. Then Sait Sahib, who accepted me as his translator when I was a student, that relation continued until his death. He was a fearless leader and he strongly argued for the minorities. Muslim League was an ally of Congress party in Kerala. But Sait Sahib never take it serious. He strongly vehemently criticized the anti-minority activities of the Congress government in the center. During the time of emergency, he stood against emergency, and once he boldly declared to Shrimati Indira Gandhi that Shrimati Gandhi, you should arrest me. If you arrest the minority leaders or the Muslim leaders in the country or the leaders of the democratic parties in the country, you should arrest me. It was Ibrahim Sulaiman Sait Sahib. Nowadays, we really miss the absence of Ibrahim Sulaiman Sait Sahib, such a leader in the parliament. Most of the leaders or the members in the parliament, they are fearing the ruling party. They have to hide much, but Sait Sahib had no hide anything. So
he took such a attitude towards the ruling class. His political ideology and thought should be propagated, and a political school is going to be started by International League in the memory of Ibrahim Sulaiman Sait Sahab at Calicut. It is a very good step. Political awareness is very important factor to those, whoever may be the community, to fight against the fascist forces in the country. Muslims alone can't protect the Muslim minorities. They should share the platform with the non-Muslim brothers and the secular parties. Jointly, such force can defend the fascist forces in the country. That is the message which really propagate or diffuse the function which is held by International League at Bangalore. सर सुलेमान सेठ साहब, सर ठीक है, एक मिनट, रेडी सर। सियासत के तरीक़त मारिफत को पार करते हुए हकीकत को पहुँचे सो इतना बड़ा ईमानदार लीडर 35 साल एमपी रहने के बावजूद 2 जोड़ी कपड़े छोड़े तो क्या भी नहीं आता। जिस तरह हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, साइंटिस्ट रहे, अब्दुल कलाम साहब, उनकी ज़िंदगी और सुलेमान सेठ साहब की ज़िंदगी बिल्कुल हक़ के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते थे। और जब तक सूरज चांद है, कौम को चाहिए उनका नाम जिंदा रखे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, मिल्लत के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ की और काम करते रहे। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, आज जो है बेंगलुरु शहर में उनकी यादगार मनाई जा रही है। इसलिए आज मेरा फ़र्ज समझा कि मैं हाज़िर हूँ। एक के बाद एक लीडर जो है चले गए हैं, बड़े बड़े कदावर लीडर। तो आज के हालात में आप क्या कहना चाहेंगे? क़यामत के आसार हैं, क़यामत के आसार हैं। अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी चले आती हैं। तो आज के सियासतदानों को मेरा ये है, खुदा का खौफ करो। अल्लाह का डर अगर है तो हर सियासतदान जो है ईमानदारी से काम करता है। खबर को सोचो, तख्त पे बैठना है लेकिन तख्ते पे लेटना है। तख्त और तख्ते में जो फ़र्क है उसे बिसरो न करो। हमारी आखिर रास्ता तख्ता ही है, तख्त नहीं है। तख्ता आप समझें। तो इसलिए आज हिंदुस्तान के अंदर खुसूसन रियासत कर्नाटक में उम्मीद है इंशाअल्लाह ये कौम का एक मुस्तकबिल फ्यूचर अच्छा रहेगा। और जहाँ तक वक्फ के बारे में जो अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उससे हुकूमत को चाहिए कि बराबर का जवाब खुद चीफ मिनिस्टर दे।